Hi students, welcome back to the course on CAD CAM. So let me just recapitulate that what we have discussed in the previous class. So as you know that we were discussing computer graphics, and I explained you in the previous class that how scanning takes place and how you actually see the pictures on your computer screen. And after that we did some numericals on computer graphics, that how we will solve the different numericals if that these numericals come in the exam. So there were some numericals, and now today we will start our lecture by explaining you two algorithms, that is digital differential algorithm and Bressenham's algorithm. So let us start our today's lecture. Now there are two most common forms of geometric elements in graphic display. One is a line and another one is a circle. And other geometric forms or other geometric elements can be converted by using these two forms, that is line and circles. Now for converting a line into a pixel position we have two algorithms. That is, first algorithm is DDA algorithm, that is Digital Differential Analyzer algorithm, and second is Bressenham's algorithm. So let us discuss our first algorithm, that is digital differential algorithm. Before we proceed on the algorithm, DDA algorithm, just remember one thing, that computer has to take care of two things, okay, while plotting a line on the computer screen. जब भी computer, when we are drawing a line on a computer screen, computer has to take care of two things. One is which pixels to be plot, कौन कौन से pixels हैं जो plot करने हैं, and the second is what all computations are required to calculate the pixel positions, means कौन कौन सी calculations करनी पड़ेंगी कंप्यूटर को उन pixel positions को calculate करने के लिए. See, I told you already that it's not a big task for us to draw a line on a computer screen. Okay, it's very easy for me. See, suppose this is first point and this is second point, and if we want to draw a line, we can draw a line easily from first point to up to second point. But for a computer it is a tricky task. Okay, for a computer it is a tricky task that how to draw a line, because I already explained you that if this is a computer screen which right now you are seeing, then this screen is divided horizontally and vertically into a small matrix of elements, that is into a pixel. इस हमारी screen में there are number of pixels depending upon the resolution. Now when we are plotting this line, so the computer is highlighting those pixels which are near to the vicinity of this line, and that's how we are seeing this line. So computer has to take care of all these things. Remember this thing. Now we will move towards our first algorithm, that is DDA algorithm, and let us see what is the expression for that. So now let us derive an expression for DDA algorithm. So DDA algorithm, as you know, it is an algorithm which is used to find out the pixel positions in order to draw a line on a computer screen. That's why we use DDA algorithm. Now in order to understand this, let us take a line, that is a line with starting point as x1 y1 and ending point as x2 y2. So these are 2 points, point number 1 and point number 2, and this we are taking a simple Cartesian coordinate system, that this is x-axis, okay, and this is our y-axis. So definitely if this is x1 y1, then from the origin, this is origin, it will become x1 and this will become x2 for the ending point. And similarly for y position, this will become y1 and this will become y2. And if we talk about this position, that what will be the distance, this distance, so definitely it will be x2 minus x1, or we can say this is delta x. Similarly, if we want to calculate this distance, then this distance will become y2 minus y1, and y2 minus y1 we can say it is delta y. Okay, this is delta y.
So as you know that the equation of straight line, okay, will be y is equal to mx plus c, and this equation is slope intercept line equation. As you know, this is slope intercept line equation of for a straight line, and in this equation we know what is m is slope, and which is y2 minus y1 divided by x2 minus x1, or we can say this is delta y by delta x, and this is delta y as you know, and this is delta x. And c, where c is the intercept in y axis, and if we want to calculate c, then c will be y minus mx. So let us say this is equation number 1 and this is equation number 2. Now for a very small increment in equation number 1, if we take a very small increment in suppose x axis, so we will easily calculate delta y. How? For a very small increment, the equation number 1 can be written as that y will become delta y will be equal to m is m, that is slope, and x will become delta x, and for a very small increment that slope will become 0. So equation number 1 becomes delta y will be equal to m delta x. Now in this equation number 3, that is this equation, by taking a small increment in delta x, okay, delta y can be calculated easily. Okay, अगर हम डेल्टा एक्स में स्मॉल इंक्रीमेंट ले रहे हैं सपोज 0.1, 0.2, 0.3 का, तो अगर हमें स्लोप पता है अपनी उस लाइन का अगर स्लोप हमें पता है, दैट इज y2 minus y1 divided by x2 minus x1, then easily we will calculate delta y. But this procedure is a lengthy procedure and it requires a lots of computational calculation and it becomes very long. So that's why in order to simplify this algorithm, let us understand that how we will solve this problem so that we don't need a lots of computational calculations. Now in order to reduce the computational calculation, that we have seen that if we direct use the equation of straight line, that is, you know, in the previous slide you can see that if we use this equation, that is delta y is equal to m delta x, and we are taking a small increment in delta x or delta y we can say, then we can calculate the next value, but it takes a very big time you can say. Now in order to simplify the computational calculations, we are taking two cases, and the first case is that when slope is less than or equal to 1. So slope, that is m, and when the slope is less than or equal to 1, so what is the meaning of that? We know that m is the slope, which is delta y by delta x, and slope means less than 1. So it suppose, let us say the slope is coming just like 1 by 2. So 1 by 2 means 0.5. So 0.5, that is less than 1. So it means that delta y by delta x will be equal to 1 by 2. When delta y by delta x will be equal to 1 by 2, then the slope will be less than or equal to 1 hoga, that is 0.5. So here you can easily see that delta y we can take as 1 and delta x as 2. It means our x is greater than y. Okay, क्योंकि y हमारा 1 है और x हमारा क्या हो गया, 2 हो गया. So x is greater than y. x बड़ा है किससे, y से. So in order to understand this phenomena, we can say this will be just like that. अगर हम इसको कार्डियन सिस्टम में ड्रॉ करें, so it will be like this. So as you know that this is delta x. If this is the line from point 1 to 2, so this is delta x and this is delta y, vertical line. So delta x is greater, you can say delta here x is greater. So x is greater and y is small, very small. So it will be approximately a horizontal line. You can say it will be approximately a horizontal line. Then the slope will be less than or equal to 1. So when such case will occur, it means the increment is going in x direction. So here you will have to take a unit increment. Unit means 1. So here in this particular case, you will have to take a unit increment in x direction, that is delta x will be equal to 1, and delta y, as you know that from this relation you can calculate delta y as delta y m delta x. वही देखा मैंने यहाँ पे, delta y will be equal to m delta x. So from here delta y will become m, because delta x is how much, 1. As delta x is 1, that's why delta y is coming as m. So what is the meaning of this? It means
Now that xi plus 1, if xi basically I notation है initial, that is the first point जहाँ से आपने शुरू किया है. If I'm saying that this 1 is the initial point, so इसके coordinates, suppose right now we do not know that what are the coordinates of 1. So हम अपने for our convenience we can say this is xi yi, we can say that. और उसके बाद there are so many points in between 1 to 2, so हम उसको ले सकते हैं xi plus 1, xi plus 1 plus 1, that is xi plus 2, इस तरह से xi plus 3. तो इस तरह से हम इंक्रीमेंट ले सकते हैं x में. सो i फॉर इनिशियल, दैट इज फर्स्ट पॉइंट, वट एवर बी द फर्स्ट पॉइंट. सो xi plus 1 विल बिकम xi plus delta x. ओके, डेल्टा x में कितना इंक्रीमेंट ले रहे हैं हम लोग. सो it will be xi plus 1 because delta x is 1. So xi plus 1 will become xi plus 1, that is unit increment in x. And delta y and yi plus 1 will become yi plus delta y, and delta y will be m. Slope, whatever be the slope, according to the question, whatever be the slope that is coming, we will have to put that value in the previous point of y, that is yi plus delta y, that is yi plus m. So in if we summarize this, then it means we will have to plot x, because x में हम लोग हर बार क्या कर रहे हैं, यूनिट इंक्रीमेंट ले रहे हैं. अगर आप जैसे सपोज इफ़ यू आर टेकिंग initial point 1, 1 and final point are 5, suppose last point is 5, 2, yeah 5, 3, 1 second, and last point is 5, 3. तो ये आप हमेशा एक यूनिट इंक्रीमेंट ले रहे हैं किसमें, x में. सो x फर्स्ट क्या होगा 1, सेकंड क्या होगा 2, 3, 4, 5, इस तरह से होगा ना. 5 आपकी आइट्रेशंस में आप 5 तक पहुंच जाओगे यूनिट इंक्रीमेंट. बट y इज नॉट यूनिट इंक्रीमेंट, तो y में आपको हमेशा स्लोप जो भी होगा दैट इज लेस देन 1, और लेस देन 1 0.8, 0.9, 0.7, 0.6 कुछ भी हो सकता है, तो आपको वो हमेशा ऐड करना है. इट मीन्स यू हैव टू राउंड y वैल्यू, आपको y, क्योंकि राउंड आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपका वो 1 से नीचे है. अगर आपका सपोज फॉर एग्जांपल अवर स्लोप इज कमिंग 0.7, तो अगर आपका 1 है तो 1 में आपने 3 तक पहुंचने के लिए 1 प्लस 0.7 करना पड़ेगा, दैट इज 1.7. तो आप उसको राउंड अप कर सकते हो. राउंड अप अगर कर रहे हो तो 2 हो गया वो. ओके, इट मीन्स राउंडिंग फंक्शन यूज कर रहे हो हम, वी आर यूजिंग राउंडिंग फंक्शन हेयर. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओवर हेयर दैट इफ स्लोप इज कमिंग लेस देन और इक्वल टू 1, देन यू विल हैव टू प्लॉट x एंड राउंड ऑफ y. ये हमारा दिस इज द कंक्लूजन, ये हम ये कह सकते हैं, दिस इज द कंक्लूजन. ओके, दिस इज द कंक्लूजन. Now let us discuss the second case. Now in second case, when slope is greater than 1, what will happen in that case? So now I guess you must understand that what is the meaning of slope is greater than 1. It means slope will be 1.1, 1.2, 1.3, just like that. So ये किस तरह से होगा? Let us take an example, just like slope we are taking right now 2 by 1. So अगर 2 by 1 ले ले तो that means slope is 2, that is which is greater than 1. 2 is greater than 1, इसका मतलब ये ना 2 is greater than 1. So you can say that अगर यहाँ पे y means 2 है और x कितना 1 है, it means however y is greater than x. पहले हमारा x is greater than y था पहले केस में, लेकिन यहाँ पे y is greater than x. इसका मतलब आपका जो स्लोप बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, जस्ट लाइक अप्रोक्सीमेटली वर्टिकल लाइन. जैसे यहाँ हमारे पास यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी थी, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बन रहा है हमारे पास व्हेन स्लोप इज ग्रेटर देन 1. So in that case, now what will happen? In that case, you can see in this slide here delta y will be 1. You will have to take a unit increment now in y direction, that is delta y will become 1. And as we know that slope is delta y by delta x, that is delta y is m delta x, as we know. So yi plus 1 now here will become yi plus delta y, that is yi plus 1 because delta y is 1. And xi plus 1 will become xi plus delta x, and xi plus delta x is how much? Delta x, as you know that delta x will be from here, delta x will be delta y by m. So वही लिखा मैंने यहाँ पे delta y by m. So delta y का हमारा क्या है? यूनिट इंक्रीमेंट, that is 1. So this equation will become now, that is xi plus 1 will be xi plus 1 by m. तो एक तो आपको ये इक्वेशन ध्यान रखनी है, that is if slope is coming greater than 1, then xi plus 1 will be xi plus 1 by m.
सो इट मीन्स हेयर वी आर प्लॉटिंग वाई, वाई में हम लोग हमेशा यूनिट इंक्रीमेंट ले रहे हैं, दैट इज +1 ऐड कर रहे हैं हमेशा, एंड एक्स में राउंड कर रहे हैं क्योंकि 1/m आ गया, जो भी वैल्यू आएगा वो डेसिमल प्लेसेस में आएगा, एंड वी विल हैव टू राउंड दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स, दैट्स वाई वी हैव रिटन ओवर हेयर एक्स प्लॉट करेंगे और राउंड करेंगे हम एक्स को, प्लॉट वाई को करेंगे और एक्स को क्या करेंगे, राउंड करेंगे. सो ये इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पे हमने एक एक्स इनिशियल पॉइंट लिया हुआ है, दैट इज सपोज दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट. सो initial point xi yi, these are the coordinates of the initial point, and next point, this is the next point, you can say, no, let us say the coordinates of next point will be, तो y में तो कोई इंक्रीमेंट हो नहीं रहा है, it means it will become only yi, okay, but increment in x हो रहा है, that is xi plus delta x, and वो delta x क्या है basically, this one is delta x, as we can see. And if we take in y direction, the coordinates for this is xi comma, one second, that is xi comma yi plus delta y, that is there is increment in y direction only, so it will be delta y or delta x or delta y depending upon the slope, you will get your value of delta x or delta y. So now if we have to summarize, if we summarize our this algorithm, so we have two cases over here. The first case is what, when slope is less than or equal to 1, then you will have to plot x and round y. It means you will have to take a unit increment in x and you will have to calculate the y value, that is yi plus m by this. Now if the slope is greater than 1, then you will have to plot y and round off x, and xi plus 1 will become xi plus 1/m. So इन्हीं दो फॉर्मूलेस का देखिए हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में. So let us take one question, and it will be clear to you now that how we will use this DD algorithm in order to find out the pixel positions. So let us take a question now. So this is our question, and the question is that a point, that is A 2 3 to B 12 8. Now there are 2 points basically. First initial point is 2 3 and second is 12 8. Use the simple DD algorithm to plot a line. Okay, so आपके पास in this question your x1 y1, this is x1 y1, that is starting point. So the coordinates for the starting point will be given to us, that is 2, 3, and coordinate for the ending point will be, that is x2 y2 will be 12, 8. So in order to solve the question, first of all find out the slope for this equation depending upon the coordinates. So slope will be, that is delta y by delta x, and it will be y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So now you know what is y2, what is y1, x2, what is x2, what is x1. Now that is 8 minus 3 divided by 12 minus 2. So when you solve this, it will be 5 by 10, that is 8 minus 3 5, 12 minus 2, that is 10. So it will be 5 by 10, that is 0.5. So 0.5 is less than 1. So as you know, this is the case which we have discussed in the previous slide, that is this is case number 1, that is our slope is coming less than 1. So for slope is less than 1, now we know that we will have to take a unit increment in x and we will find the y value, and you know that unit increment in x is, that is delta x will be equal to 1 and delta y will become now m. How? As you know that slope will be equal to delta y divided by delta x. So from here delta y will become m delta x, okay, and since delta x is 1, so delta y will be equal to m के बराबर होगा. Okay, so now in order to solve this question, the best way is इसको tabulated form में आप कर दीजिए. Okay, tables की form में करना है. सबसे पहले iteration लिखिए फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में what is the x value, what is the y value, and then y round करके आपको क्या मिला वही तो करना हमने. आपने देखा जो हमारा फर्स्ट केस है, इन दिस फर्स्ट केस नाउ वी विल प्लॉट x एंड राउंड y. y को आपको राउंड करना है, x में तो आपको हमेशा इंक्रीमेंट लेना है x का,
बट वाई में आपको क्या करना पड़ेगा, वाई में आपको राउंड लेना पड़ेगा. सो दैट्स वाई वाई राउंड. और एक और कॉलम बना लीजिए फॉर योर कन्वीनियंस, दैट इज what you will plot now. Finally what you will plot, just like first iteration, that is initial iteration. What is xi? This is x, इसको आप xi भी ले सकते हो. Okay, this 2 is xi and what is yi? yi मतलब initial yi क्या है हमारे पास, so yi will be 3. so 2, 3 that is xi yi. so xi 2 लिख दिया मैंने, yi 3. so what राउंड क्या करना पड़ेगा आपको 3. तो आपको राउंड कुछ नहीं करना है, इसका मतलब 3 will be a exact value, so it will be 3. so what you will have to plot now, 2, 3. जो प्लॉट करोगे आप वो करोगे 2, 3. these are the pixel coordinates. okay, now the next iteration, that is first iteration, now what will become, that is xi plus 1. next iteration means next position क्या होगी आपकी, so xi, क्योंकि xi अगर ये है and xi plus 1 दिस है, so अब हमें पता है दिस इज केस नंबर 1. so xi plus 1 will become xi plus delta x and delta x is what, delta x is 1. so 2 में आपको 1 ऐड करना पड़ेगा बिकॉज xi हमारा 2 है, तो 2 plus 1 is 3. ओके, तो मैंने आपको वही बोला था कि आपको हर बार x में 1 1 1 1 क्या करना पड़ेगा, अब इंक्रीमेंट लेना पड़ेगा. so xi plus 1 will become 3 and what will become yi plus 1. so yi plus 1 will not become 3 plus 1 4 because अब आपको यहाँ पे for yi plus 1 you will be doing yi plus m like that, because yi plus delta y, this is yi plus exactly क्या है, क्या वैसे ये है, and it will be yi plus delta y is what, delta y is m. so yi plus m आपको ऐड करना पड़ेगा. it means yi plus 1 will become yi plus m and it will be 3, that is yi हमारे पास 3 है, ये देखिए आप यहाँ पे ऊपर. so 3 plus slope is 0.5, it will be 3.5. मतलब 3 में आपने 0.5 ऐड करा तो 3.5 आ गया. अब इसको राउंड ऑफ करना है आपको, 3.5 राउंड ऑफ कर क्या हो गया, 4 हो गया. इट मीन्स यू विल हैव टू प्लॉट 3,4. 3,4 आपको क्या करना है, प्लॉट करना है. ये जो मैं राउंड कर रहा हूँ बेसिकली प्लॉटिंग पॉइंट्स हैं. यू विल हैव टू प्लॉट 2 3 फर्स्ट, फिर 3 4 आपको सेकेंड प्लॉट करना है. सो इन दिस वे नाउ दिस प्रोसीजर विल कंटिन्यू. ओके, सो लेट मी जस्ट शो यू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ अब हमने 0 और फर्स्ट आइटरेशन कर दिया है, तो सेकंड आइटरेशन, दिस इज सेकंड आइटरेशन, थर्ड आइटरेशन, फोर्थ आइटरेशन, दिस इज अप टू 10 आइटरेशन तक हमारा ये सॉल्यूशन आ गया है. नाउ xi, दैट इज xi नेक्स्ट वैल्यू क्या बनेगी. अब हमारी प्रीवियस वैल्यू क्या है, प्रीवियस वैल्यू देखिए 3 है, पहले 2 3. अब आपको कैलकुलेशन विल बिकम वेरी इजी. नाउ आपको हमेशा एक एक ऐड करना है. तो 3 बन गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पे रुक जाना है. क्यों, बिकॉज हमारा जो फाइनल पॉइंट है वो क्या है, हमारा 12 है. अगर ये 13 होता तो आप उसको 13 पे लेके जाते हैं. सो रिमेंबर देते हैं. सो 12 पे हमारा क्या हो गया, ये आंसर आ गया आपका. ओके, हेयर. नाउ y विल बिकम व्हाट, y आपका जो प्रीवियस हमने पॉइंट छोड़ा है वो है कितना, 3.5. ये 3.5 है, देखिए ना प्रीवियस वैल्यू. इसको मत लेना, जो आपने राउंड करा है उसको नहीं लेना है आपने जो एक्चुअल वैल्यू जो आपकी है दैट इज व्हाट इज yi plus 1 मीन्स नेक्स्ट वैल्यू क्या है, दैट इज 3.5. तो 3.5 को लेना है आपने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में. तो 3.5 प्लस 0.5 अगेन, क्योंकि हर बार आपको स्लोप अब ऐड करना पड़ रहा है. सो इट विल बिकम 4. तो नाउ अगर मैं सेकंड आइटरेशन की बात करूँ तो x वैल्यू विल बी 4 एंड y वैल्यू विल बी राउंड अप करके 4 विल बी 4 विल बिकम 4. सो 3 4 ओके 4 यस. सो यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, दिस इज रॉन्ग बिकॉज ये आइटरेशन 2 है. सो प्लॉट करना है आपको 4, सो लेट मी करेक्ट दिस, इट विल बी 4. ओके, सो 4, इसी तरह से हमारा क्या हो गया, 4 प्लस 0.5 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8. तो इस तरह से कैलकुलेशन आप देखिए किस तरह से आसान हो गया. अगर आपको फर्स्ट 2 आइटरेशन समझ में आ गया है देन यू विल नाउ ऐड स्लोप इन y वैल्यू एवरी टाइम एंड राउंड ऑफ करके देखिए 4 का 4 हो गया, 4.5 का 5 कर दिया बिकॉज राउंड अप कर रहे हैं हम लोग. 5 5 5.6 का 6 बना दिया, 6 का 6 6.5 का 7, इसी तरह से.
सो ये हमने फाइनल प्लॉटिंग वैल्यूज़ लिखी हैं कि 4,4 5 5 6 5 7। तो अब देखिए हमेशा x में तो इंक्रीमेंट हो रहा है 4 5 6 7 8 9 10 यूनिट इंक्रीमेंट है x में हर बार, बट y में क्या करना पड़ रहा है, राउंड ऑफ करना पड़ रहा है। सो इट विल बी 4 5 फिर अगेन 5 6 6 7 7 8 8। अब दिस इज द एंड पॉइंट, यू कैन से दिस इज द एंड पॉइंट, जो हमें एंड पॉइंट आना था दैट इज 12,8 और स्टार्टिंग पॉइंट हमारा था 2,3। तो 2,3 से हमने शुरू किया और हमारा एंड कहाँ पे आ गया, 2,3 से हमने शुरू किया था एज पर अवर क्वेश्चन, एंड एंडिंग हमने कर दिया 12,8 पे, लाइक दिस। So what are all these plotting points? So these are pixel coordinates. These are the pixel coordinates which says that in order to draw a line from point 2,3 to 12,8, you will have to highlight these pixel coordinates. ये pixel जो आपके वो highlight होंगे आपके. And how, if you want to understand this concept, then you will have to plot a raster diagram in order to understand this. So let me just show you. Now the best way to understand these pixel positions will be, you will have to draw a raster, you will have to draw a raster display system, okay, and you will have to locate the first point and the end point. So as you know that the first point is 2,3, so I have written over here 1 2 3 4. So these are the pixel coordinates basically. हर एक pixel का अगर आपको coordinates बताने हैं, then you will write that in between these 2 points I have written 1. So in pixel 2, in between 2 pixel I have written 2. So these all are pixel coordinates. So अगर मैं आपको बात बताऊं that find out the pixel coordinates for the initial point, that is 2,3. So for 2,3, this is 2 and this is 3. So this will be the pixel coordinate, you can say. तो इसको आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हो, this will be the pixel coordinate for 2,3. Okay, and 12,8, this is 12 and 8 will be this. So when we draw these two lines, this will be the final point. So this is the initial point, this is the final point. So ये आपको मैंने डिस्प्ले कर दिए पिक्सल्स, बेसिकली यू कैन सी इजीली द पिक्सल्स. नाउ इफ यू वांट टू ड्रॉ अ लाइन, अगर आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स, ये हमारा हो गया इनिशियल पॉइंट एंड यू कैन से दिस इज अवर फाइनल पॉइंट. So definitely this will be like that, let us say. Okay, now you can see ये हमारा बेसिकली एक लाइन है, लेकिन इस लाइन के नियर अराउंड जो पिक्सल्स होंगे वो हमने कैलकुलेट कर लिए विद द हेल्प ऑफ DDA एल्गोरिथम. सो लाइक जो आपका जो फर्स्ट पिक्सल है वो 2 3 हमने कर दिया. व्हाट इज योर सेकंड पिक्सल? सेकंड पिक्सल हो गया हमारे पास 3,4. सो 3,4 आप हाईलाइट कीजिए, वो देखिए इस पिक्सल्स के बिल्कुल साथ में होगा वो 3 and this is 4. So it means this pixel will be highlighted. Okay, definitely this pixel will be highlighted. Next pixel क्या होगा हमारे पास 3,4 के बाद, that is 4th pixel. ठीक है, 4 4 5 5. ओके, तो 4 4 तो हमारे पास ये आ गया. ओके, 5 5 will be, this is 5, this is 5, this will become, ये पिक्सल हाईलाइट, ये पूरा एरिया आपको हाईलाइट करना पड़ेगा. This will be the pixel area. 4 4 5 5 के बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया. 6 5 7 6. So 6 तो ये हो गया, 6 5 इसके आगे वाला हो गया. 6 5 के बाद 7 6 बोला हमने. This is 7 and this is 6. तो ये वाला पोजीशन आ गया, इसको हाईलाइट कर दीजिए. ओके, उसके बाद 8 6 है, so 8 will be this one and 6 will be this. तो ये वाला पिक्सल हाईलाइट हो गया. यू कैन सी कि इस लाइन के देखो जो नियर वाले पिक्सल्स है वो हाईलाइट होंगे आपके. एंड 8 6 के बाद कौन सा आपका आएगा? 9 7 10 7. दिस इज 9 एंड 7 इज दिस. 9 7 ये आ गया. 10 7 विल बी दिस वन. उसके बाद 11 6 आ गया हमारे पास. 11 8. 11 and 8 is this. और 12 8 तो हमने हाईलाइट करा ही था लास्ट में. अब देखिए these pixel coordinates, यही हमने निकाले हैं कि
फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन, ये आपका हो गया इनिशियल पोजिशन. So from the initial point to the final point, yeah, to the end point, you can say starting point to end point, which pixels should be highlighted with respect to this DD algorithm. Okay, that we can explain with the help of this raster system. If we draw a raster system on our copy, you know, with any dimensions, कोई dimensions इसका कुछ है नहीं, आप अपनी विद योर कन्वीनियंस आप उसको ले सकते हो. पिक्सल याद रखिए कि एक्स और वाई का जो पिक्सल है उसका वो यूनिफॉर्म रहे बेसिकली. तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो. एंड आई होप दिस क्वेश्चन विल बी नाउ क्लियर टू यू दैट हाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. इफ क्वेश्चन में कम, देन हाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस. सो आप इसको इसको देखिए इस लेक्चर को आप. एंड if you face any difficulty in this question regarding DD algorithm and the question which I have discussed with you, then you can ask this question. Okay, so thank you so much.